Hello, welcome to Basic Education Kaksha, Class 8, Chapter 1, Crop Production and Management. Paheli and Bozo went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली and Bozo अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन में. Their uncle is a farmer. उनके अंकल जो थे वो फार्मर थे. One day they saw some tools like kurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. Some tools उन्होंने अपने अंकल के घर पे देखा. वो क्या क्या थे? खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in the field. Okay, I want to know where and how we use these tools. ये कह रहा है कि मैं मतलब वो ये पहेली और बोझो में से बोझो कह रहा है कि मुझे पता करना है कि लाइक ये टूल्स का यूज कैसे होता है. लाइक मैंने तो ये टूल्स तो अब देख लिए, बट इस टूल्स का यूज क्या है. सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. हमने पहले भी क्लासेस में पढ़े हैं कि लाइक ऑर्गेनिजम्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फूड जरूरी होता है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू ग्रो. टू ग्रो वी नीड फूड. तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves. Plants खुद के फूड खुद ही बना सकते हैं with through the process of photosynthesis. photosynthesis करके वो अपने फूड खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. Can you recall how green plants synthesize their own food? Okay, green plants synthesize their own food with the help of photosynthesis in presence of sunlight, water, carbon dioxide, and chlorophyll. Okay, animals including humans can not make their own food. एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड खुद ही से नहीं बना सकते. वी आर डिपेंडेंट ऑन समबडी. लाइक प्लांट्स पे डिपेंडेंट है या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है. हम लोग डिपेंडेंट है. हम खुद के खाना हम खुद नहीं बना सकते. हाँ, हमें रॉ मटेरियल मिल जाए तो वो हम पका ले सकते हैं, बट हम खाना खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकते. सो वी आर डिपेंडेंट ऑन सम plants or animals. So where where do animals get where do animals get their food from? तो कहाँ से एनिमल्स को फूड मिलती है? एनिमल्स को कहाँ से फूड मिलती है? ऑब्वियसली हार्बिवोरस. वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. वी आर हार्बिवोरस. Sorry, we are dependent on, such as humans are omnivorous. We are dependent on both plants and animals. Some animals are herbivorous, suppose cow. Some animals are carnivorous, for example, lions. Some are scavengers, like vultures. Some are detrivorous, like earthworms. Okay, तो ये कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हो गए जो जो डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले हम फूड क्यों खा मतलब हमें क्यों फूड खाना चाहिए? हमें खाना क्यों खाना चाहिए? क्योंकि we need energy, because we need energy, because energy provides us because food provides us energy through which we can perform daily activities and many other functions. So we need food. Through food do we can perform, we can go our different activities. So it is highly required to have our food. Again, uh, food helps in our growth because it has nutrients. Okay, and health. It is essential for our health because our body needs vitamins, minerals. Okay, functioning. It also helps in our normal functioning, such as digestion, breathing.
So we had to have our food. You already know that energy from the food is utilized by organisms or carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretions. As I told, we need to perform our body functions as well as our different activities. So we need to have our food. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? So, अगर हमें इतनी ही फूड की ज़रूरत है, तो हम इतने सारे लोगों के लिए एक वास्ट कंट्री के लिए फूड कैसे प्रोड्यूस करेंगे फिर प्रोवाइड कैसे करेंगे हम इतने लोगों को फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एक बड़ी मात्रा में हमें फूड की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमें फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन की ज़रूरत है प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस till 10,000 BCE before common era people were nomadic. Who were nomadic? Nomadic are people who uh, people who move from one place to another rather than settling themselves permanently in one location. मतलब एक किस्म के लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं विदाउट एनी सेटलमेंट वो सेटल नहीं होते हैं कहीं पे भी और वो बस इधर उधर तक भटकते रहते हैं तो इन लोगों को हम नोमैडिक कहते हैं they were wandering in groups from one place to a place in search of food and shelter what is wandering wandering मतलब कोई फिक्स्ड पर्पस के बिना इधर से उधर भटकना सो दिस इज कॉल्ड वंडरिंग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड की तलाश में एंड शेल्टर के लिए दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे ये लोग क्या करते थे रॉ फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स खाते थे वेजिटेबल्स खाते थे एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड एनिमल्स को भी हंट करना चालू कर दिए थे लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस wheat and other food crops later they learned how to cultivate and produce different crops so they started agriculture there was the born of agriculture when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called a crop जब plants एक ही किस्म के प्लांट्स एक ही टाइप्स के प्लांट्स एक जगह पे बहुत सारे एक जगह को इन अ लार्ज स्केल में एक कल्टीवेशन होती है तब उसको क्या कहते हैं क्रॉप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल crop of wheat means that crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat तो मतलब अगर वीट कहीं पे वीट की कल्टीवेशन हो रही है सपोज तो वो पूरा जो एरिया जहाँ पे वीट कल्टीवेशन हो रही है तो कौन सी क्रॉप कल्टीवेशन हो रही है देयर क्रॉप ऑफ वीट you already know that crops are of different types like cereals vegetables and fruits how many types of crops are there cereals pulses vegetables cash crops there are many types of crops these can be classified on the basis of the season in which they grow. This can also be classified into in on the basis of seasons. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown into different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are okay according to season three broad uh, cropping patterns are there so one is kharif one is rabi and third is which is not mentioned here is z crop in notes I will provide you
जब मैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब चिप चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के बाद मैं एक वीडियो में पूरा नोट दे दूंगी और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, वो नोट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दैट। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो पूरा देखना। पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो फिर समझ नहीं आएगी चैप्टर। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, वो अच्छी तरीके से देखना। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बेसिक एजुकेशन कक्षा को। ओके, लेट्स स्टार्ट। Kharif crops. The crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. जो भी crops rainy season में sown करते हैं उन्हें हम kharif crops कहते हैं. The rainy season in India is generally from June to September. June to September. So example of these crops are, sorry, example of this kharif crops are paddy, maize, soybean, groundnut, cotton are kharif crops. Okay, next rabi crops, the crops grown in the winter season. एक हो गया rainy season, kharif crops are sown in rainy season and rabi crops are sown in winter season, October to March. For example, wheat, gram, pea, pea, mustard and linseed. These are the examples of Rabi seed. Beside this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. Okay, we will learn now. We'll talk about Zaid crops. Zaid crops are grown between Rabi crops and Kharif crops. Okay, and the timings are from March to June. Okay, खरीफ क्रॉप्स स्टार्ट होते हैं जून से सितंबर तक और ये अक्टूबर से मार्च तक। तो मार्च और जून तक ये जेद क्रॉप्स होता है, क्योंकि जेद क्रॉप्स इनके बीच में होती है। ओके, जेन क्रॉप से क्या एग्जांपल्स है? वाटरमेलन, क्यूकम्बर। जेड क्रॉप्स की वाटरमेलन, क्यूकम्बर एंड समर वेजिटेबल्स। जो भी समर में वेजिटेबल्स अवेलेबल है, क्योंकि उस टाइम हमारी समर सीजन रहती है। सपोज मार्च से हमारी जून, ऑलमोस्ट जून तक हमारी अच्छी खासी समर सीजन चलते हैं। तो जितनी भी समर की वेजिटेबल्स है समर सीजन के, सब तब मिलती है जेट क्रॉप के टाइम। ओके, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? इसका क्वेश्चन है बोझो का। Now Pehli is answering. Paddy requires a lot of water. Paddy को बहुत water की ज़रूरत होता है. Therefore, it is grown only in the rainy season. Okay, this is something which is important. So you can underline it or put a star mark. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. Cultivation of crops involve करते हैं बहुत सारी activities. ठीक है, तो वो एक टाइम पीरियड तक चलती है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. Like अगर जब अगर तुम वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी अपने घर में ग्रो करते हो, देन यू नीड अ गार्डनर। और इफ यू आर डूइंग दिस ऑल दिस प्रोसेस, तो क्या होता है कि हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कुछ चीजें हमें अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है ताकि क्रॉप्स हमारे ग्रो करें। दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड, इन्हीं टास्क को और एक्टिविटीज को आर रेफर करते टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। दिस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। तो व्हाट आर द preparations we take before cultivation of crops? These are, we do 8 steps. The first step, preparation of soil. Second stage, first step, preparation of soil. Second stage, sowing. Third, adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. And seventh, storage. Now, preparation of soil.
The preparation of soil is the first step before growing a crop. This is the first step which we took before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. So we need to lose soil before we start cropping, right? This allows the roots to penetrate deep into the soil. So जब हम सॉइल को लूज कर लेते हैं, इसमें क्या फायदा होती है, जो भी हमारे रूट्स होते हैं वो भी वो और डीप पेनेट्रेट करते हैं, वे और डीप चल जाता है और अच्छे से वो पकड़ मिलती है, वो सॉइल में ना एक बढ़िया सा पकड़ मिलती है. द लूज सॉइल allows the roots to breathe easily. This loose soil क्या करते हैं, helps or allows the roots to breathe easily. Properly breathe कर पाते हैं even when they go deep into the soil. अगर वो deep भी चली जाती है तो भी वो अच्छे से properly breathe कर पाते हैं. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? Okay, the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. Loosened soil क्या करती है, हेल्प करती है earthworms को और microbes को ग्रो करने के लिए, जो कि प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होती है. These organisms are friends of farmer. These organisms are friends of farmers since they further turn and the loosened soil and add humus to it. So ये क्या करते हैं, ये और भी फर्टाइल करते हैं सॉइल को by providing humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? क्यों चाहिए? You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. तुमने पहले भी पढ़ा है ये चीजें कि सॉइल क्या क्या कंटेन करते हैं, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन एडिशन, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. जो भी सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज कर लेते हैं सॉइल प्लांट्स, सॉरी, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. These nutrients are again absorbed by plants. जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिलती है वो वापस जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, few centimeter of the top layer of soil supports plant growth. थोड़ी सी जो लेयर होती है, टॉप मोस्ट जो लेयर होता है वो सॉइल की सपोर्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को. Turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जब हम थोड़ा सा ऐसे लूजन कर देते हैं सॉइल को और टर्न करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली रीच कर पाए टॉप तक. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. So you'll read this. The process of loosening and turning, the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. This is called tilling or plugging. This is done by using a plug. This is done by using a plug. Plugs are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. जब वो सॉइल बहुत ड्राई होते हैं तो हम थोड़ा सा ऐसे पानी छिड़क, just sprinkle some water to make it wet so that it can be easily plugged. The plugged field may have big clumps of soil called crumbs. जो भी plugged field होते हैं ना, उस जो थोड़े से बड़े clumps होते हैं सॉइल के, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रम्ब्स कहते हैं. We call this crumbs. It is necessary to break this crumbs. जो भी ये छोटे छोटे से गोले गोले होते हैं ना सॉइल के, उसको हम क्रम्स कहते हैं. वो छोटे छोटे गोले हमें से तोड़ देने चाहिए. We need to break that
लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। हमें लेवल कर देना चाहिए सारी चीजें, ऐसे कोई भी क्रम्स बन के नहीं रहेगी, हम ब्रेक कर देंगे उसे, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के टाइम हमें आसानी रहती है, तो बहुत बेनिफिशियल होता है वो। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। हाउ डू वी लेवल a soil? We level with the help of leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. कुछ फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर हम लोग ऐड कर देते हैं टिलिंग के पहले, मतलब प्लगिंग के पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये और भी हेल्प क्या करता है, प्रॉपरली मिक्स हो जाता है मैन्योर। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। मॉइस्टेंड हो जाता है सोइंग के पहले। एग्रीकल्चरल implements. Now agricultural implements. Okay. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. Proper yield के लिए, proper yielding के लिए हमें जो भी सॉइल क्लम्स रहेगा वो हमें ब्रेक कर देना होगा, ताकि सोइंग अच्छे से हो पाए और यील्डिंग भी अच्छे से फिर हो पाएगी। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर the plug, hoe, and cultivator. This is a image of plugging. So you can see this is how farmers plug their land. This is called a beam, plug shaft, and plug shear. Okay, this is the image of plug. So you can practice this image, this one. Okay, now plug. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop. प्लग हम लोग हमारे यहाँ एंशियंट टाइम से यूज हो रही है टू टिल और टू प्लग द सॉइल, ऑल्सो adding fertilizers, removing weeds and turning the soil. Okay, this is made of wood and is drawn by a pair of bulbs or other animals. Bulls, sorry, I'm sorry, a pair of bulls or uh, other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plug shear. Okay, this is called strip. This is called plug shear. Okay, it contains a strong triangular iron strip called plug shear. The main part of the plug is a long log of wood which is called plug shaft. तब जो मेन पार्ट होता है प्लग का, वो लॉन्ग लॉग वुड की बनी होती है, called plug shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plug. जो भी जो भी ट्रायंगुलर शेप है, उसको ट्रायंगुलर शेप का जो आयरन स्ट्रिप है उसे हम प्लगशियर कह रहे हैं, और जो भी पूरा मेन पार्ट है ये वाला, इसे हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। ओके, one end is attached in the bull's neck and the other part is used by the man, is operated by the man to plug the land. The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plugs nowadays. जो भी wooden plugs है वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जा रहे हैं आयरन प्लग्स थ्रू। मतलब आजकल लोग आयरन प्लग्स ज्यादा यूज कर रहे हैं वुडन प्लग्स के कंपैरिजन में। हो, it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. This is a simple tool, एक basic सा tool है which is used for removing weeds, weeds remove करने के लिए and soil loose करने के लिए. It has a long rod of wood or iron, a strong board, a strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends, and
Walks like a blade. It is pulled by animals. Okay, what is said? It has a long rod. इसका एक long rod है. हम लोग देखते हैं थोड़ा सा. It has a long rod. Yes, this is a long rod. This is long rod. Okay. Now, or a long rod of wood or iron, जो कि wood और iron का है. A strong, broad and bent plate of iron. Strong, broad and bent plate. This is called strong, broad and bent plate made of iron. Okay. The iron is fixed to one of its ends. It is fixed. See, it is fixed. It is fixed here. Okay. And works like a blade. It works like a blade. It is pulled by animals. This is pulled by animals. Okay. This is an image of hoe. So practice this image properly. Okay. Now cultivator. Nowadays, plugging is done by tractor driven cultivator. प्लगिंग किससे होती है? ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से. द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, जो कि लेबर और टाइम दोनों सेव करता है. सोइंग. What is sowing? Sowing is an important part of crop production. This is an important part. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Sowing से पहले good quality, clean and healthy seeds of good variety select किया जाता है. Farmers prefer to use seeds which give high yield. Farmers वही seeds ज़्यादा use करते हैं या फिर prefer करते हैं, पसंद करते हैं जिससे high yielding मिले. Selection of seeds. Now, one day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. एक दिन मैंने देखा अपनी मॉम को कुछ ग्राम के सीड्स को वेसल में रख के उसमें पानी भर के रख देना रख दिया उन्होंने. After a few minutes some seeds started to float on top. कुछ seeds ऊपर float करने लगे. I wonder why some seeds float on water. अब मैंने सोचा कि कुछ seeds ऊपर क्यों float कर रहे. Take a beaker. Now do an activity. Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Properly उसको stir कर दो. Wait for some time. Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. एक बीकर लो, उसमें हाफ ऑफ बीकर को वाटर से फिल कर दो और उसमें एक हाथ भर के व्हीट के सीड्स लो और अच्छे से उसको स्टीर कर दो. नाउ व्हाट विल यू सी? All the seeds float on water? सारे seeds float करने लगेंगे water के ऊपर, या फिर कुछ seeds heavier होंगे वो sink कर जाएंगे और कुछ जो lighter होंगे वो float करने लगेंगे, या फिर why would they be lighter? जो जो seeds float करेंगे वो lighter कैसे हो जाएंगे? Because the damaged seeds become hollow हो जाती है जो भी damaged seeds होता है और वो फिर lighter होके float करने लगते हैं. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. So this is a good process to separate the healthy seeds from the damaged seeds. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. Sowing करने से पहले एक important task किया जाता है ताकि ये tools use to know about the tools, ताकि हमें टूल्स के बारे में पता चले जो कि यूज होने वाले हैं सोइंग के टाइम. ट्रेडिशनल टूल. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज shaped like a funnel.
जो भी टूल पहले यूज होता था सोइंग करने के लिए सीड्स के, वो कैसा था? फन, इट्स जस्ट लुक लाइक अ फनल. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल. Okay, let's see an image of funnel. Hmm, image of funnel. Okay, this is a funnel. ठीक है, this is a traditional tool. The seeds are filled into the funnel. funnel के बीच अंदर दिया जाता था, और funnel से वो पास डाउन हो जाते थे 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प ends, जिसके शार्प ends होते थे. Let's see. This is how it is sown. This ends pierce into the soil and place seeds there. जो कि pierce मतलब soil के अंदर seeds को ऐसे place कर देते थे. Okay. Today up to this is a traditional method of sowing seeds. So now today up to this, thank you. Thank you. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.